Hi everyone and welcome. In today's video, you're going to learn how to do the teardrop back bend, which is also called Dimbhasana in yoga. Follow along this stretching routine in order to improve your back flexibility and get closer to your teardrop back bend. Dear viewers, इस वीडियो में दी हुई एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह फॉलो करें ताकि आप भी पूर्ण चक्रासना या दिम्भासना अच्छी तरह सीख सकें. You will begin this stretching routine with few basic upper body stretches. Make sure your body is properly warmed up before you follow this stretching routine. इस रूटीन की शुरुआत आप कुछ बेसिक अपर बॉडी स्ट्रेचेस से करेंगे. इस रूटीन को फॉलो करने से पहले मेरे दिए हुए वार्म अप रूटीन को जरूर फॉलो करें. In the next exercise, we will perform the basic back bend. If you don't know how to perform a perfect back bend, then follow my back bend tutorial and practice for the same. दूसरी एक्सरसाइज में आप चक्रासन परफॉर्म करेंगे. अगर आप चक्रासन अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर दिए गए ट्यूटोरियल को पहले फॉलो करें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें. Now get into the back bend bridge and perform few bridge walks from your hands. Make sure you are properly breathing, and if you feel dizzy, then sit back, have some water and relax. अगली एक्सरसाइज में आप बैक बेंड की इस पोजीशन में आकर अपने हाथों को मूव करेंगे. ये करते वक्त सांस अच्छी तरह लेते रहें और अपनी बॉडी को ज़्यादा फोर्स ना करें. Now stand up, relax and bend forward. Now for the next exercise, you will get into the elbow bridge, perform the proper back bend and then switch to your forearms. This stretch is very effective as well as intense for your spine, so make sure you follow it with the proper balancing and technique. Now again you will perform the bridge pose, but look at the video carefully. Here you will keep your hands and legs as straight as possible. अब इस एक्सरसाइज में आप चक्रासन दोबारा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको अपने हाथों और पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है. अगर आपके लिए ये पोजीशन बैलेंस करना मुश्किल है तो आप दीवार के सहारे भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं. Now here you will perform the slow teardrop back bend from the standing position. Take a deep breath, extend your arms, extend your upper body and try to bend backwards slowly. As long as you reach the ground, try to touch your legs. When you get a proper hold on your legs and a proper balancing posture, then straighten your body. अब अंत में आप दिम्भासना को धीरे धीरे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. लंबी सांस लें, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करें और उसे पीछे मोड़ने की कोशिश करें. जल्दबाजी ना करते हुए अपने पैरों को पकड़ें और जब आप एक प्रॉपर बैलेंस बना लें तो अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लें. दिम्भासना को अच्छी तरह सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें.